Hello class 10 students, कैसे हैं आप लोग? I welcome you to this mathematics class. This is lecture number 14 and this is triangles part 3. As you know, we have covered we have taken two lectures on triangle. One was triangle 1 and the second was triangle 2. In triangle 1 and 2, let's recap what exactly we did. We talked about what do we understand by similar figures, then we talked about what do we mean by similar triangles, then we talked about what do we understand by theorem, and we know that theorem is basically non-self-evident statement which needs proof, and proving of a geometrical theorem needs to be done in a certain algorithm, and the algorithm which we talked is that you have to follow the particular steps diligently, then only you would be able to prove in a very mathematical fashion, in a very consistent fashion, in a very systematic manner, and then only you would be able to have the clarity of the theorem. And then even if we talk about in terms of board examination, you would be able to secure all marks in proving any theorem which comes in your board exam. What was the step? We talked about the steps should be that first you have to write exactly the statement of the theorem. Second, you have to extract all the given information in the theorem. Third, you have to write exactly what you need to prove. Then you have to if any construction is required for which will assist you in proving the statement or proving the theorem, then you are going to say you are going to follow the step of construction, that what exactly needs to be put into the construction which will assist you in proving. And the last step where you will be using the concept of deduction from input to output, that how the precondition of the statement leads to the output of the statement. So this is what we talked about, the algorithm. I'm sure आपको अभी तक हमने 6 theorems already cover कर लिए हैं. We began the journey with Thales theorem, that is basic proportionality theorem. After basic proportionality theorem, we talked about converse of basic proportionality theorem. Then we talked about the similarity concept. We talked about triple S similarity. Then we talked about triple S similarity. Then we talked about SAS similarity, and we consistently proved all the 5 theorems in a very nice sequence. You don't have to forget this sequence. This sequence is very important because one theorem helps you prove the other theorem. So if you abuse the sequence, let's say if you try to prove converse of basic proportionality theorem, you will get stuck because you don't know what is basic proportionality theorem. So to prove basic converse of basic proportionality theorem, you need to know what exactly is basic proportionality theorem. To prove triple A, you need to know what exactly is BPT. So the sequence is going to play a very important role. So these 5 theorems we did, and the last theorem for the last class was, if two triangles are similar, then the ratio of their areas is going to be equal to the square of the ratio of their sides. This is what we talked in the last theorem. Now 3 more theorems are left which will complete this chapter. 3 more theorems is basically totally specific for right angle triangle. So we will be seeing what are these 3 theorems, and we'll follow the same analogy, same algorithm to prove that theorem. Okay, so let's see what exactly these theorems are. One more additional theorem I will be discussing, that is angle bisector theorem, which is not given in your NCERT textbook, but this is very important as far as your competitive exams are concerned. So we will be talking about angle bisector theorem. If time permits, we'll also talk about what do we understand by angle bisectors. Are they concurrent? If they are concurrent, what do we call the point of concurrency? Then we are going to talk about what is the name of that point of concurrency, and what exactly is angle bisector theorem. So if time permits, we'll be talking about angle bisector theorem in detail. So let's begin the journey, but you have to remember these sequences are going to play a very important role. So you cannot afford to forget these sequence. So you have to understand, for excelling in this chapter triangle, if for scoring 100% marks in your board examination this chapter, you need to know these 9 theorems in a consistent fashion. At the same time, when you are proving it, you don't have to lose marks in missing out the algorithm. So you have to write the statement of the theorem, then you have to write what exactly is given, then you have to write what needs to prove, then you have to write construction, then you have to write the proof. This is how we are going to do it. So let's see the first theorem of the day, that is the 7th theorem. Let me read the statement. If a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle of a right triangle to the hypotenuse. If condition says, अगर आपके पास एक right angle triangle है
उसमें एक राइट एंगल है, राइट एंगल के वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो जो कि हाइपोटेनस पे गिरेगा, ऑफ कोर्स द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज हाइपोटेनस. So if a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle triangle to the hypotenuse, then so preconditions आपको पता चल गया, these are the given condition. Then triangles and on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. So let me show it what in a geometrical way that what exactly it means. So if you say this is your right angle triangle, let me call this triangle as right angle triangle. So what is the precondition? That okay, you have a right angle triangle ABC, right triangle, and you have to drop a perpendicular. So I'm dropping a perpendicular. So I dropped a perpendicular. So this is the perpendicular. Let's call it as D. So you have triangle ABC, right angle triangle at A. This is the given condition. So someone asks you what is the given condition, you can say given triangle ABC, right angled at A, and BC is hypotenuse. And what did you do? You dropped AD is perpendicular to BC. This is the given condition, right? Now, what exactly it is saying? Then the triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. So if you talk about, let me call this triangle as a blue triangle, the triangle on the left of the perpendicular, let's call this as blue triangle. And perpendicular on the right, let's call it a yellow triangle. So what he wants to say that yellow triangle and blue triangle is similar to the big triangle and similar to each other. So what you need to prove, that triangle blue is similar to triangle yellow is similar to triangle blue plus yellow, that is the big triangle. You have to prove this. Okay, why did I write triangle blue, triangle yellow, triangle blue plus yellow? Because when we say two triangles are similar, we always write in a very corresponding manner, in a very right sequence. So we don't know exactly what sequence should be, we just know that these three triangles are similar to each other. That is what we need to prove. Now any steps of construction is not required. In this question, no steps of construction is required. You just need to go into the proving part. I'll just take this image to the next page. Just copy it. So I'll just take it this. So no step of construction is required. So I'll just first, let me resize. So what we need is proof. So this is no step of construction is required. So we can directly jump into the proof. But before we jump into the proof, let me show you something. That if I say triangle ABC, so I can call this angle as, let's call this angle as X. So this angle is going to be Y, right? Of course, angle B is X, then angle C would be Y. And you know X plus Y is going to be 90 degree. Why do you say that X plus Y is going to be 90 degree? Because angle of a right angle triangle, the sum of angle of a triangle is 180 degree, one angle is 90 degree, definitely the other two non-right angle would be add up to 90 degrees. So they are going to be complementary to each other. So X plus Y is going to be 90 degree. So if I look into the blue triangle, let's call triangle blue. So in triangle blue, you can definitely say this is 90 degree, this is X, so this is going to be Y, because X plus Y equals 90 degree. And if you look into triangle yellow, this is going to be 90 degree, this is Y, so this is definitely going to be X. So what I am going to write is triangle ABC, the big triangle. If I am going to write triangle ABC, so angle A is 90 degree
angle B is X and angle C is Y. I chose triangle ABC. First triangle can be chosen in any fashion. At the same time, I chose, as I can see, all the three triangles, all the three corresponding angles are equal, right? All the three, as you can see, one triangle is 90xy, the other triangle is 90xy. So simple triple A concept is directly applied to prove this theorem, that these three triangles are similar. So triangle ABC. Now let's say if I have to write triangle blue, so what I need to say, that angle, first angle should be 90 degree, which is angle D is 90 degree. Then I should write angle B as X, and then I should write angle A as Y. So what should be the triangle? Triangle should be triangle DBA. Similarly, if I look into the yellow triangle, I have to write 90 degrees. So first angle D is going to be 90 degrees. So this is 90 degree. Then I need X. So angle A is going to be X. This is the angle, right? And then angle C is going to be Y. So I can say triangle DAC. So I have done a right nomenclature. So what I need to say, that triangle ABC, triangle DBA and triangle DAC are similar to each other through what? Through triple A. So I can say, okay, triangle ABC is similar to triangle DBA is similar to triangle DAC, triple A similarity. So we again used the previous proved theorem, that was triple A similarity. So hence proved. This was, you can say, a very easy theorem to prove. But this theorem is going to assist you in proving the next theorem, that is called Pythagoras theorem. So let's see what exactly is Pythagoras theorem. I'm sure you have been studying Pythagoras theorem since your class 7th. Right, so everybody know what exactly is Pythagoras theorem. You have a right angle triangle, then the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of the sides. So what's the statement? In a right angle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square. So what you can see, the given condition is right angle triangle, and the to prove a statement is square of hypotenuse is equal to the. So what should be the, first let me draw the diagram. So this is going to be your right angle triangle. Let's call this as right angle. Let me draw a proper diagram. So this is your right angle triangle, okay? Now I'm going to call this as 90 degree. So let's call this as A, this as B, this as C. So given is triangle ABC is right angled at A and BC is hypotenuse, is the hypotenuse. This is the given condition. What you need to prove? You have to prove that hypotenuse square, that is BC square, equals AB square plus AC square. This is what you need to prove. So the third step is going to be the step of construction. I'll just take this diagram to the next page, copy, paste. I'll just squeeze in so that I have a step. Now what I need to prove is, I'm going to draw, the third step is going to be my construction. And in construction, what I am going to do, as you know, in the last class, in the last theorem, we have proved that if you drop a perpendicular, then both the triangles and the big triangle, all three are going to be similar. So what the same exactly thing I am going to do? I am going to drop a perpendicular. I am going to call this as D. So construction is AD is perpendicular to BC, drop by dropping perpendicular from A on BC, right? Dropping perpendicular from A on BC. So you have this. Now you know this angle is X, this angle is Y, this angle is Y, this angle is X. So you know these three triangles are similar. What does it imply? It simply implies that triangle ABC, the big triangle, is similar to triangle DBA is similar to triangle DAC,
This is what we did, right? 90xy, ABC is 90xy, DBA is 90xy, and DAC is 90xy. So I followed the same sequence in what we did in the last class. So this is my extraction which is going to help me assist proving the theorem. Now what we need to prove? We need to prove that BC square is equal to AB square plus AC square. This is what we need to prove. And what we got triangle ABC is similar to triangle DBA is similar to triangle DAC. This is what we got, right? So what we need is AB square, AC square and BC square. And if we get these from these two information, let's say if I say triangle ABC is similar to triangle DBA, okay, let's see how it is going to help me. Let me use the different color. Let's call red. So if I say triangle ABC is similar to triangle DBA, so what I can see is AB here and I can see BA here. So what I can write is AB के corresponding क्या आएगा? AB के corresponding आएगा DB. यहाँ पे BA है तो यहाँ पे मैंने BA लिख दिया, तो BA के corresponding क्या आएगा? BC. So मैं ये कह सकता हूँ AB into BA is equal to BC into DB. Now AB into BA is nothing but AB only. So what you can say is AB square is equal to BC into BD. DB को मैं BD भी लिख सकता हूँ. So this is my first statement, right? So मुझे AB स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया. Let me find AC स्क्वायर. तो अगर मैं कहूँ ट्रायंगल ABC is similar to triangle DAC. So AC के पैरेलल क्या है? AC के corresponding क्या है? DC. AC by DC. अब यहाँ पे क्या है? AC है, तो मैंने यहाँ पे AC लिख दिया. AC के corresponding क्या है? BC. यहाँ पे BC. तो क्या हो गया? AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC. अगेन AC इंटू AC इज AC स्क्वायर, राइट? सो हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट आ गया, AC स्क्वायर इज BC इंटू DC. अब ये दो इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, सो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर वुड बी इक्वल टू क्या होगा? BC इंटू BD, BC इंटू BD प्लस ये क्या है? BC इंटू DC, BC into DC. Let me pick the figure so that you can see with your own eyes that what exactly we have done. So now you can see that, okay, in left hand side what you got? AB square plus AC square. This is what you wanted in your left hand side. Now in right hand side, if you look, you have got BC into BD plus DC, BD plus DC. If you look here, this is BD and this is DC. What is BD plus DC? You tell me. BD plus DC is actually BC. So you can say AB square plus AC square equals BC into BC, which is BC square, right? So you have already proved the Pythagoras theorem. I'll just prove one more way to prove the Pythagoras theorem. But that way should not be used for board examination. I'm just telling you, just an algebraic way, and it's an easy way to prove. Everybody know, let's say this is A, right? Let's call this as B. Now, again you can take A, sorry, and then again you can take B. I copy it. Right. Now as you can see, this is a perfect square whose side is A plus B. Right, it's a perfect square whose side is A plus B. So what will be the area? Area is going to be A square plus B square plus 2AB, right? You know it since your bachpan days, that what is A plus B whole square. Now let me do some rearrangement. Okay, so what I'm going to do, I'm going to take this here
and I'm going to take this here. Then I'm going to take this here, and I'm going to take this here. Now, if you look, I have just interchanged the few blacks and reds with each other, but the whole area will remain unchanged. As you can see, this is a perfect square of side A plus B. Now, let me show you something. Let me take this green color. What I'm going to do, I'm going to connect this with this. I'm going to connect this with this. I'm going to connect this with this, and I'm going to connect this with this. So if you now focus here, this whole yellow thing, sorry, this yellow quadrilateral has turned out to be a square. This yellow quadrilateral has turned out to be a square. How can you say that it is a square? Again, you cannot say directly that it's a square. So what you need to know that, okay, the four sides are equal and each angle is 90 degree. Then only you can call a quadrilateral a square. Now आपको ये पता है कि this is 90 degree, this is 90 degree, this is 90 degree, this is 90 degree. If I call this as x, this is going to be y. And since you know these two triangles are this triangle, this triangle, this triangle, and this triangle. Let me color for you. Let's go. So this blue triangle, this blue triangle, this blue triangle, and this blue triangle. You know these four triangles, what these four triangles are? These four triangles are congruent, as you can see directly that it, okay, yeah, they are congruent. And you can see this is going to be y and this is going to be x. So if this is x, this is y, so definitely this is going to be 90 degree because x plus y equals 90 degree and the whole thing is one straight line, so that is going to be 90 degree. So this is going to be 90 degree, this is going to be 90 degree, this is going to be 90 degree, and the whole sides are going to be equal because all the four triangles are congruent. So you can say that yeah, yellow quadrilateral is a perfect square. Now if you call this as A, this as B, you can call this as C. So what will be the area of this yellow square? This is going to be C square. And what will be the area of this right triangle? This is going to be, this is A, this is B, so this is going to be half AB. How many right angles you see? 4. So 4 into half AB is 2AB. So you can say the whole area is going to be C square plus 2AB, which is equivalent to A square plus B square plus 2AB. So what you can say, A square plus B square equals C square. This is the proof of Pythagoras theorem through algebra and geometry, right? But this proof should not be used for your board examination because teacher is going to give you 0 marks for this proof. So, but at the same time, it's more beautiful to prove this way. But for board examination, you have to know that you have to prove the way we did it in the previous way. So it's an easy to understand. You can see if you have again you missed out, then again you can restructure it. You will be able to figure out, rewind it, and then watch it. It's fun to prove. The last theorem of NCERT book, that is the converse of Pythagoras theorem. As you know, converse of Pythagoras theorem में क्या होगा? आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा, आपको बताना होगा कि ये ट्रायंगल राइट है. इन अ ट्रायंगल if the square of one side is equal to the sum of the square of other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle. So what he wants to say that, okay, you have a triangle, let's call this triangle as PQR, and he's saying that QR square equals PQ square plus PR square. This is given. This is given condition. Okay, this is given condition. What is given? Given that QR square equals PQ square plus PR square. What you need to prove? To prove angle P is 90 degree. What is say? Then the angle opposite to the first side, QR, the square of one side, that square of one side, QR square equals the sum of the other two, PQ and PR. So you have to prove that angle P is 90 degree or this side is hypotenuse. So you have to prove that angle P equals 90 degree. So this is the thing you just need to do with the converse of Pythagoras theorem. So what is already you already got the Pythagoras theorem. तो proof करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? Construction. Construction क्या करेंगे आप? Construction करो triangle ABC. आपको एक ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट करना है जो कि राइट एंगल है, एट
ए, राइट। और दूसरी चीज आपको देखनी है कि ए बी शुड बी इक्वल टू पी क्यू एंड ए सी शुड बी इक्वल टू पी आर। आपको ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो तुरंत कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। सॉरी, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया है, विच इज गोइंग टू बी ए बी सी एंड दिस इज 90 डिग्री and AB is actually equal to PQ. Let's call this as X and this length as Y. So you can say this is X and this is Y. Okay. So AB equals PQ आपने ड्रॉ कर दिया, AC equals PR आपने ड्रॉ कर दिया, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रूफ करना है कि एंगल P 90 डिग्री है। बट यू नो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वुड बी इक्वल टू, अब क्या कंस्ट्रक्शन के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं टू प्रूफ। तो आपके पास क्या पता चल गया है, आप कह सकते हो कि ओके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू कैन से बाय पाइथागोरस थ्योरम थ्रू कंस्ट्रक्शन, राइट। सो यू कैन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स बी सी स्क्वायर। आपके पास ऑलरेडी क्या दे रखा है, आपको दे रखा है गिवन कंडीशन में, गिवन कंडीशन में आपको दे रखा है क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। आपको पता है क्यू आर स्क्वायर वुड बी इक्वल टू पी क्यू को हमने एक्स बोला है एक्स स्क्वायर और पी आर को बोला है वाई स्क्वायर। तो आपको पता है क्यू आर स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आपको यह भी पता है कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चलता है कि क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स बी सी स्क्वायर। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि क्यू आर इक्वल्स बी सी। इससे क्या पता चलता है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में आपको क्या पता चलता है, आपको पता चलता है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, आपने कंस्ट्रक्शन से ही कर दिया था। ए सी इज इक्वल टू क्यू आर, आपने कंस्ट्रक्शन से ही कर दिया था। और अभी आपने प्रूफ किया, सॉरी पी आर, दिस पी आर, और आपने अभी प्रूफ किया बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, राइट। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है ट्रायंगल ए बी सी is congruent to triangle PQR। कैसे, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से। इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको पता चलता है कि एंगल A would be equal to angle P which is your 90 degree, hence your converse of BP Pythagoras theorem is proved, right। तो आपको क्या करना था, आपको ट्रायंगल PQR ऑलरेडी दे रखा था कि ओके वन साइड इज द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अपोजिट टू साइड अदर टू साइड्स। आपको सेम एक ट्रायंगल बनाना था जो कि जिसका दो साइड बिल्कुल भी सेम हो और 90 डिग्री बनाना हो। एट द सेम टाइम आपने इक्वेशन ट्रायंगल एबीसी बनाया। ट्रायंगल एबीसी में आपने क्या रखा, आपने रखा ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी आर। उसके बाद आपने कहा ओके इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल सो आई कैन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स बी सी स्क्वायर। एट द सेम टाइम आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है बी सी स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर बराबर है, इसका मतलब क्यू आर और बी सी बराबर है। ऑलरेडी ये आपको पता है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन से कि दोनों इक्वल हैं। तो बी सी वुड इक्वल टू क्यू आर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए। तो आप कह सकते हो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। जैसे ही आपने प्रूव किया ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है एंगल ए और एंगल पी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो दे शुड बी इक्वल। हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट एंगल पी इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। ओके बच्चा लोग, सो द दिस finishes your theorem from your NCERT book. Now you are free to finish your triangle chapter. आपको जहां पे भी प्रॉब्लम आ रहा है you please focus on that. वहां पे जो भी दिक्कत है you send us through email. We'll be doing your problem solving. At the same time आपके लिए हम मैथ्स के लाइव सेशंस भी ला रहे हैं जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अमरजीत सर के आपके रेगुलर लाइव सेशंस होंगे जिसमें अमरजीत सर आपके सारे डाउट्स हैंडल करेंगे। जो भी दिक्कतें आ रही हैं एट द सेम टाइम आपके जो वीडियो लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ वो आपके रेगुलर आते रहेंगे। Now coming to this last theorem of the day, that is angle bisector theorem. Let me talk what exactly is angle bisector theorem. Angle bisector theorem says that an angle bisector of a triangle will divide the opposite side into two segments that are proportional to the other two sides of a triangle. तो पहले ये बता देते हैं कहना क्या चाह रहा है। अगर ये ट्रायंगल है, right? Let me try to explain that theorem. और let's say this is your angle. और इसका एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। कर लिया, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। लेट्स कॉल दिस एज एक्स डिग्री, तो ये भी क्या हो गया एक्स डिग्री, है ना। मान लीजिए एंगल ए जो था वो 2x डिग्री था। तो आपको पता चल गया है कि एंगल ये
लेट्स कॉल दिस एज AX। तो आपको पता चल चुका है कि AX इज द एंगल बाइसेक्टर जो डिवाइड किया है, और यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट्स कॉल दिस एज D पॉइंट। तो ये कह रहा है द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सेज दैट एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल विल डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू टू सेगमेंट्स दैट आर प्रोपोर्शनल टू द अदर टू साइड्स। अगर मैं इस लेंथ C के अपोजिट वाले साइड को लेंथ में मान लेता हूं C, क्या मान लेता हूं C, और B के अपोजिट वाले लेंथ का साइड में मान लेता हूं B, तो इसका लेंथ C है स्मॉल c और इसका लेंथ है स्मॉल b। तो ये कह रहा है कि BD by DC would be equal to C upon B। This is what you need to prove। This is to prove। तो फिर से मैं लिख लेता हूं गिवन कंडीशन में आप लिख सकते हो ट्रायंगल ABC, AX is angle bisector of angle A। You can call it internal angle bisector क्योंकि दो चीज होती है, एक एक्सटर्नल भी होता है एक इंटरनल होता है। You can write it AX is internal bisector of angle A। उसके बाद आप लिख सकते हो AX intersects BC at D, so you can say AD। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ BD by DC is actually equal to AB by AC। ये आपको प्रूफ करना है ऑल्टरनेटिव साइड्स का। मतलब अगर कोई एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आपके ट्रायंगल के अपोजिट साइड को डिवाइड करता है तो दैट डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ द एडजेसेंट साइड। जो एडजेसेंट साइड है उसी रेशियो में डिवाइड करता है, ये आपको प्रूफ करना है। आइए इस कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कंस्ट्रक्शन करके कुछ फायदा होगा कि नहीं। तो लेट मी ड्रॉ द ट्रायंगल। तो मैंने ये ट्रायंगल लेट से ड्रॉ कर दिया। ओके मैंने इस एंगल को कह दिया 2x। तो आप जानते हो इसको आप एक्सटेंड कर दो, है ना, ये आपका एंगल बाइसेक्टर मान लीजिए। ओके दिस इज योर एंगल बाइसेक्टर, लेट्स कॉल दिस एज ABC, राइट। ये x है, ये x है, x डिग्री x डिग्री। ओके नाउ व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज दैट यू कैन what you need to do is that you have to draw a line parallel to AB। okay you have to draw a line parallel to AB, let's call CY, let's call it CY, or let's extend it, sorry, or you can, let's say, get rid of this। okay now let's call this as X। so now I can say that okay this is D। so construction क्या हुआ? we have drawn CY parallel to AB, we have drawn CY parallel to AB। let's say AX and CY meets at E। so this is the construction which is need to be done। now what you need is the proof। so construction आपने क्या किया? आपने CY parallel to AB बना दिया। क्यों बनाया अभी आपको पता चल जाएगा, अभी आपको सारी ज्ञान हो जाएगी। तो आप इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। बेस्ट इसको रिसाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए गौर से देखिए, आपको पता है CY इज पैरेलल टू AB। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है A इज द ट्रांसवर्स, A इज ट्रांसवर्स, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं अगर ये x है तो ये भी x होगा, राइट। ये अगर x है तो ये भी x होगा। अगर मैं इसे y कहता हूं तो ये भी y होगा, और इसे मैं अगर z कहता हूं तो ये भी z होगा। इससे आपको क्या पता चला? इससे आपको पता चला कि ब्लू ट्रायंगल इज सिमिलर टू येलो ट्रायंगल, आप कह सकते हो। तो आपका पहला स्टेप क्या हो गया? आपने कहा ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू XYZ के फैशन में आपने किया है, तो इज सिमिलर टू ट्रायंगल
ECD is similar to triangle ECD, जिसे आप कह सकते हो AB का corresponding क्या है, EC. AB upon EC is equal to BD upon CD. आप कह सकते हो AB upon EC is equal to, let me show you, AB upon EC, ये AB है, ये EC है, is equal to BD upon CD, ये BD है और ये CD है. तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन EC. हमें प्रूफ क्या करना है, ये हमें प्रूफ कर दिया. और हमें प्रूफ क्या करना है, ये हमने अभी निकाल लिया. टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ है AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD. तो मतलब क्या प्रूफ करना है, हमें बस ये प्रूफ करना है कि EC इज इक्वल टू AC है कि नहीं. अभी आप देख लो, अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान दो, लेट मी टेक दिस टू द नेक्स्ट पेज, यहीं पे दिखा देता हूं. आप इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, पिंक ट्रायंगल पे ध्यान दो. अगर आप पिंक ट्रायंगल पे ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये x है तो ये भी x हो जाएगा. तो अगर मैं ट्रायंगल AC की बात करूं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या है, इसका मतलब ये ट्रायंगल है आइसोसेलेस. आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात क्या होती है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है और ये साइड और एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं. तो मैं ये कह सकता हूं AC वुड बी इक्वल टू EC. तो ये मुझे पता चल चुका है कि AC इज इक्वल टू EC. कैसे पता है, EC इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू AC. ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि मुझे पता है ये x है ये x है. तो मैं ये कह सकता हूं EC इज इक्वल टू AC सिंस ट्रायंगल ACE इज आइसोसेलेस एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल E विच इज इक्वल टू x. हमने ये डायरेक्शन ऑलरेडी बता रखा है. तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. सो इन दोनों को देखते हुए हमने ये प्रूफ कर दिया था कि ओके BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन EC हमने प्रूफ कर दिया था. और अभी हमने प्रूफ किया EC एक्चुअली इक्वल्स टू AC आइसोसेलेस ट्रायंगल से. इन दोनों को मिलाते हुए हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया BD बाई CD इज इक्वल टू AB बाई AC. Hence I can say in angle bisector theorem, अगर आपका जो कोई ट्रायंगल, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है तो अगर इंटरनल एंगल अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, एडजेसेंट साइड के रेशियो में करेगा. So this finishes your triangle chapter. I am sure you are now equipped to solve all your triangle questions from NCERT and NCERT exemplar. आपको जहां पे भी दिक्कत आ रहा है इस वीक आप पूरा खत्म कर लीजिए अपना NCERT का ट्रायंगल चैप्टर. आपको जहां पे भी दिक्कत आ रहा है विल बी कंडक्टिंग लाइव सेशंस जहां पे आपको डाउट्स आप पूछ सकते हैं. उसके अलावा विल बी हैविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अगेन, जो कि प्रीवियस टॉपिक्स को भी लेंगे और इस टॉपिक को भी कवर करेंगे. और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज में मैं आपके लिए PRMO और NTSC से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ओके बच्चे लोग, सो लेट्स मीट वेरी वेरी सून. आई एम श्योर क्या कहते हैं यू ऑल आर taking care of what we have done because we have finished hell lot of syllabus and those syllabus needs to be assimilated. It's not important कि आपने कितना cover कर लिया, it's more important कि आपने कितना उसको assimilate कर लिया है, कितना आप उस पे excel mastery पा चुके हो, कितना आपको उसमें excellency आ गया है. Okay, so let's meet very very soon. Bye bye, take care, all the best.